Okay, hello, all of you. Very good evening. तो तार क्लास टी आरंभ करिया ता आगुरु समस्त अनुरोध कि प्लीज टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब टिके कर दियो कमेंट टिके करो क्लास पूरा केमति लागुची आगु मते टिके समय दे मुटे शेयर कर दू चला समस्त को आसीबा को भी दियो टिके है ना समस्त टिके आसंतु लेन आसंतु टिके क्लास टिके हम टिके भलो से करबा आगु प्रणाम प्रणाम प्रीति प्रणाम हाँ क्लास आरंभ करिया राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग of the Indian Constitution are a directly principle state policy mentioned. Okay, part 4 बहुत बढ़िया प्रीति बहुत बढ़िया राइट आंसर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है शेयर करो लेट गला ओके which from which country's constitution where the DPSP are borrowed okay যদি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি আমি কো জায়গারো বড় করিছে না কো জায়গারো আনিছে আমি কমনওয়েলথ লো বহুত বড় আইল্যান্ড আনছে না আইল্যান্ড আনছে बहुत बड़ा आयरलैंड इज राइट आंसर तासे देखो which article of Indian constitution define the purpose scope of DPSP ओके को आर्टिकल DPSP विषय को ना आयरलैंड स्पेनिश रु बोरोड करजियस बहुत बढ़िया है ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जोटा स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जगह बहुत बड़ी जिन होती देखिए को मिलो है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा जानते हो है ना which of the article of Indian constitution define the scope of DPSP 36 article 36 okay right answer article 36 बहुत बढ़िया है which of the following is it true about the direct principle of state policy या भी थ्रू DPSP रो ठीक कोड लगा are enforceable by court they are binding by the state they are non justiciable they are applicable to the union territory कौन रहेगा right answer Yes, yes, they are non-justiciable. Okay, non-justiciable in nature. Okay. তারপরে which committees suggested the classification of right into justiciable and non-justiciable category? Okay, which committee suggested the classification of rights into justiciable and non-justiciable category? बलवंत राय मेहता कमिटी, सपूर कमिटी, स्वर्ण सिंह कमिटी, सरकारिया कमीशन. Sapur Committee 1945 okay option B रहेगा ना Sapur Committee 1945 okay
Which of the following Indian constitution directs the state of promote the welfare of the people? Okay. The article of Indian constitution directs the state to promote the welfare of the people. Or 38, 39, 40, 41. Article 38 is the right answer and 38 is the right answer. तापर देखो concept of uniform civil code mentioned in the which articles in the constitution कहता नंबर article रे हमर uniform civil code UCC रो mention ହେଇଛି ओके article 30 केते article 30 कौन sorry article केते 44 बहुत बड़ा article 44 द्वारा जी union यो कौन हमर uniform civil code ऊपर describe करछ ओके तापर देखो which of the following DPSP is inspired by the Gandhian principle? Okay, direct principle state policy inspired by the Gandhian principle, promotion of international peace, organization of village panchayat, separation of judiciary from executive, and equal pay for equal work. हाँ 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 ओके अमेरिका जन महिला प्रणाम पूजा प्रणाम है ना अमेरिका जन महिला यूसीसी टाକୁ ଆଣିଥିଲେ विलेज पंचायत हाय ओ ये क्या लिख दिया तुमने हम तो कन्फ्यूज हो गए है ना ओके राइट आंसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ओके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एमती ना जगह रखु तो है ना which article directs the state to provide free and compulsory education for child up to 14 years मते भी एसु नाही नोटिफिकेशन कार नोटिफिकेशन पाइलो नहीं अरे यार कौन करिवा हाँ अच्छा वो हमारा ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦଉଥିବ ହେଲା ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଲାନି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦଉଥିବ କାଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ଥିବ ହେଲା ତ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ କେତେବେଳେ 8ଟା ବେଳେ ଆଉ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ରାତି 8ଟାରେ ଦିନ 11ଟା ଚେକ୍ କରିଦଉଥିବ ପ୍ଲିଜ ଓକେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦଉଥିବ ହେଲା 8ଟାରୁ 8:30 ଭିତରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିବ ନା ଆର୍ଟିକଲ 21 अरे रे 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 क्या करेंगे आदि पीएसपी भी गोटे आर्टिकल अरे यार तो सेମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡା ମୋର ଲସ୍ ହଉଛି ନାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ହଉ କିଛି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ହେଲା ହଁ ଆରେ रे 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 राइट आर्टिकल 21 हब राइट आंसर है ना which article promote the educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe and other weaker section article 46 47 48 49 କେମିତି କରିବା କହିଲ ଦେଖିବା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଇପାରିବ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇପାରିବ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦଉଥିବ ଆମ ସେସନଟାକୁ ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ବି ଯାଉଥିବ ନା Article 46 is the right answer. Okay. तापर देखो the directive principle of state policy directs the state to protect and improve the environment. कितने नंबर आर्टिकल ऑन द आसे 47 48 49 50 option B 48A is the right answer. 48A is the right answer. Okay. Which of the following is not a feature of DPSP? या भी तो कोड़ा DPS रा feature नहीं है. The aim to establish a welfare state. They are enforceable by law. They are included in social, economic, and political justice. They are fundamental in the governance of the country.
बुझी पारलो ऑप्शन डा एटा देखले दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ की दे व्हिच ऑफ फॉलोइंग नॉट फीचर डीपीएसपी या कि तो कोडा फीचर नुहे हैला दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ एटा कोन फीचर की डीपीएसपी रो The article directs the state to ensure equal pay for equal work for both men and women. Okay, Article 39D, 39A, Article 41, 43. Okay, 39D of Puja and Priti. Okay. No, separation of judiciary from executive is found in which of article? Oh, article 48, 49, 50, 51. Separation of judiciary. अच्छा. Okay. Separation of judiciary from executive. केते नंबर article on जाए? बहुत तरह discuss करती हूँ मुझे बहुत तरह कही देती है. Right answer टा कौन होगा? Article 50 is the right answer. Okay. Separation from judiciary from executive. Judiciary executive টো अलगा और article 50 on जाए. Okay. सत्य जय जगन्नाथ अच्छा सत्य गोटे जिनस कह यूट्यूब नोटिफिकेशन तुमको जाऊँगी ना नहीं कहल देखिए कारण एवं दी जन कहले कि नोटिफिकेशन टी आसुनी कौन तुमको भी नोटिफिकेशन गला ना सर्च कल आर्टिकल 50 ओके व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना आसुनी कौन करवा यूट्यूब हेड को गोली मार दवा जाए बम पके जा कहर ना आदर बैन कर दो ना बाप Which article of Indian Constitution deal with the election of presidents of India? 52, 54, 55, 5, 6. पूजा देखी कि पूजा मत कटक हम कि बोधे ना ओके 54 आर्टिकल 54 The President of India holds office for a term of how many years? So President of India holds office for the how many years? ये टाइप रो क्वेश्चन मानिया कथा नहीं किंतु आंसर कौन करियो कहि दियो राइट आंसर 7 इयर्स बोली कोन अछि कौन हो प्रीति पूजा एंड सत्य भद्रक जाइलु देखियो अरे सत्य मोर ये बरा कटक बरा 5 वर्ष इज राइट आंसर है अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीचमेंट ओके आर्टिकल केते ऑन द प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट को इंट्रोड्यूस करा जाला 56 61 65 70 67 कौन रहबो राइट आंसर कहलो देखी हे भगवान पू Article 61, okay. Article 61, okay. Who administers the oath of office to the President of India? Okay, Prime Minister, Chief Justice of India, Vice President, yes, Speaker of Lok Sabha. The administrator of oath and office, the President of India, Prime Minister, Chief Justice of India, President of India, Vice, CJI. Satya, Priti and Puja. ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके फिलहाल तो पढ़ाई पे फोकस करो है व्हिच आर्टिकल डिफाइन ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 64 66 67 हे भगवान डियर को भाई 51 सीजे Article 67, okay. Vice President of India is the ex-official chairman of a body of Lok Sabha, Rajya Sabha, Niti Aayog, Election Commission of India. कौन रहेगा प्रीति पूजा एंड सत्य
ए राज्यसभा केन देबो ओ वाइस प्रेसिडेंट हां हां वाइस प्रेसिडेंट हां राज्यसभा इज राइट आंसर ऑप्शन बी ओके राज्यसभा इज राइट आंसर जदि हम देखिबा एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को जगह एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहिबे जे देखिबा तार नीति आयोग रहबो हला ओके नीति आयोग एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के रहिबे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहिबे से जगह रे मन गितो एटा भी मन गितो दिथाओ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टा ना एटा राज्यसभा हो ओके तब देखो अंडर आर्टिकल ऑफ इन वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल ऑफ अंडर व्हिच आर्टिकल इज द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड ओके वाइस बफरिंग है ना के रो चुट्टी जाक सब मोर साइज रहउनी ओके अंडर व्हिच आर्टिकल इज द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड आर्टिकल केते होन वाइस प्रेसिडेंट लोकेट इलेक्टेड होन ना कौन रही कह देखिए आर्टिकल 64 66 67 68 अरे भाइस प्रेसिडेंट कथा कहनी आमर ये प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है वाइस प्रेसिडेंट कथा ठीक किंतु प्राइम मिनिस्टर होते एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ओके आर्टिकल 66 ऑफ राइट आंसर हो ना तापर देखो which article provide for the consent of minister to aid and advise of president article 74 75 76 77 कौन रहिबो पीजी प्रीति पूजन सत्य जल्दी क्लास टा खत्म करवा हला 74 is the right answer Priti 74 बोल बड़ा rapid fire okay who appoint the prime minister of India okay prime minister of India के appoint करे president vice president chief justice और speaker of lok sabha कौन है वो जल्दी सत्यप्रीति पूजा है ना कौन है वो जल्दी दियो आंसर दियो है ना rapid fire president बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया next question president article 75 okay हैं okay तो which article deal with the appointment of the Attorney General of India? Okay, which article deal with the Attorney General of India? Article 76, 77, 78, 79. जल्दी सत्य प्रीति 76 सत्य जल्दी 76 आर वेंकटरमण बहुत बड़ा है ना तो आर्टिकल 76 इज राइट आंसर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल डिस्क्राइब द composition of the Parliament of India 79 80 81 82 कौन रहे सत्य जल्दी आंसर दो पूजा आर्टिकल 79 ओके आर्टिकल 79 बहुत बढ़िया ना नेक्स्ट क्वेश्चन the maximum strength of the Rajya Sabha is fixed at how many members 250 300 350 400 250 आर्टिकल 80 अनुसार कौन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा ओके आर्टिकल 80 है which article provide for the disqualification of a member of the parliament on the ground of defection anti defection law विषय जदि कहबा तो केतन नंबर आर्टिकल आसे आर्टिकल 101 102 103 104 102 आर्टिकल 102 ऑप्शन बी इज राइट आंसर है who describe disputes regarding the disqualification of member of parliament okay बहुत बढ़िया पूजा है ना पूजा जल्दी को राइट आंसर रैपिड फायर है ना कौन रहेगा राइट आंसर who decided dispute regarding the disqualification of member of the parliament president speaker of lok sabha election commission supreme court
सुप्रीम कोर्ट भी जो प्रेसिडेंट हब ना ऑप्शन ए हम प्रेसिडेंट हब ना प्रेसिडेंट हब ओके इसी नहीं प्रेसिडेंट हब प्रेसिडेंट हब ना देखो which article deal with the privileges and immunities of a parliament and its member which article deal with the privileges and immunities of parliament and its members article 104 105 106 and 107 कौन पूजा एंड प्रीति सत्य आई थिंक ही इज गॉन काई आंसर तो दो ना এটা মনে রখিথ এই কোশ্চিন টিকে সমস্ত মনে রখিথ হলা তুমি ଦି ଜଣ କହୁଥିଲ କେନ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ନା ତ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥ ହେଲା ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ହେଲା आर्टिकल प्रिलिम्स रे पचार दो होला ओएस को यूपीएससी रे भी होला पचार दियो मने रखिथ होला देखो the salaries and allowances of members of parliament are determined under which article देखो ओपीएससी कथा किंतु यूपीएससी कथा जदि मु कहबी हला तो हमर यूपीएससी रे कोनो पार्लियामेंट ओटी समस्त टिके देखि जाय तो आंदे डीपीएसपी टा देखि जीवो आ ता सहित जदि फंडामेंटल राइट टा को फंडामेंटल राइट को डिटेल एनालिसिस डीपीएसपी टा डिटेल एनालिसिस पार्लियामेंट टा को एज वेल ओके डिटेल एनालिसिस करी जायथिबो ना जदि तुम दी जमा प्रिपेयर हो बोली सकाळे कहउथलो मु कहउछि हला द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिटरमाइन अंडर व्हिच आर्टिकल ओके आर्टिकल 106 ओके आर्टिकल 106 आर्टिकल 106 हला the article defines a money bill okay which article define a money bill विषय रे भी बहुत पचार जदि सिविल सर्विस में प्रिपेयर चलछि तो मनी बिल टा मते ध्यान रखि देतो हला मनी बिल टा केतर बड़ आर्टिकल रा 108 109 110 111 बहुत बड़े सत्य 110 110 110 ओके 110 इज राइट आंसर ऑप्शन सी 110 110 110 प्रीति पूजा एंड सत्य है ना who can introduce a money bill in parliament okay जदि who can introduce money bill टा को की introduce money bill regarding जितकी होची सेही गुडा को भी मन रखिथियो है ना कौन who can introduce a money bill in parliament राज्य सभा only लोक सभा only both houses of parliament and president okay समस्त को अनुरोध यार प्लीज तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो कमेंट भी कर देला आउरी भलो लागियो और शेयर भी कर देला आउरी भलो लागियो होला ओके लोकसभा ओनली होबो आर्टिकल 109 अनुଯାয়ী इंट्रोड्यूस मनी बिल इन पार्लियामेंट ओके लोकसभा ओके व्हिच आर्टिकल डील विद द प्रेसिडेंट असेंट ऑफ बिल ओके यदि को आर्टिकल प्रेसिडेंट को असेंट फाइनल असेंट जो प्रेसिडेंट को द्वारा दिया जाए तो कौन करे आर्टिकल 108 109 110 111 अच्छा प्रेसिडेंट से जगह कौन कर परिबे असेंट दे परिबे होल्ड कर परिबे एंड सेटा रिटर्न कर परिबे देन सेटा को रिकंसीडर भी करा जाय परिबे ओके एति जिनस टिके प्रेसिडेंट को रिलेटेड टिके मन रखितो होला 111 आर्टिकल 111 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आर्टिकल 111 हला द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न व्हिच टाइप ऑफ बिल फॉर रिकंसीडरेशन हला मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनरी बिल ऑल ऑफ देबो ओके आउट जिनस समस्त फैक्ट कहि दोची जदि मनी रिलेटेड बिल आसिला देन से जगह को प्रेसिडेंट दबा को बाध्य असेंट ओके सेटा को रिटर्न कर पारे रिकंसीडर कर परिबे नाही ओके ऑर्डिनरी बिल ओके ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट कैन रिटर्न व्हिच टाइप ऑफ बिल ऑर्डिनरी बिल ला को से ऑर्डिनरी बिल ला को तमे फेरे दे पारे हला होल्ड कर दे पारे ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट बिल ला को से ऑर्डिनरी बिल टा हो होला only ordinary bill okay सत्य प्रीति एंड पूजा which article provide for the establishment of supreme court in india article 100 केते 24 25 26 27 1 2 का 4 है ना गीत टा मन रखि देता 1 2 का 4 है ना अनिल कपूर रो गीत टा थिला 1 2 का 4 है हाँ पठांदी किंतु आप टिके विजिलेंट अछि एटा टिके क्लियर अछि ना कि नै डायरेक्ट तुम ऑर्डिनरी बिल दे देला
ऑर्डिनरी बिल जदी आसीबो देन तुम सेटा डायरेक्ट प्रेसिडेंट मोर मार दे लागे नले जा रिटर्न कर गया हला ए टाइप रहला तो से टाइप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोथ ऑफ पार्लियामेंट रे जे डिस्कस हेतिबो है ना तो तापर सेटा आसीबो ऑर्डिनरी बिल ऑल्दो आसीबो मना नै कि ऑर्डिनरी बिल गोटे साउंड हो जे से टाइप रो तो सेंति जानत हला माने लखन हां बहुत गुड़ा पिला गुड़ा असन हमरो बहुत गुड़ा एंगेजमेंट है ना व्हिच आर्टिकल डील विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट अच्छा अच्छा मु आउट जिंस मु गोटे मजा वाला जिंस हला समस्त समय टिके नेबी कोन कि ए जो पीरियडिक टेबल रहउची हमर साइंस रो पीरियडिक टेबल तार गोटे गीतटे अछि यार कोन से गीत रो मन पडु तार गोटे मु रिसेंट गोटे मीम देखुतली तार गोटे गीत अछि हला से गीतटार एग्जैक्ट जहा अछि से पीरियडिक टेबल ता अछि हला नै से गीतटार जहा अछि से एग्जैक्टली से पीरियडिक टेबल ता अछि म मन पडले ओल्दो से गीतरा हला ओके व्हिच आर्टिकल डील विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ओके आर्टिकल 127 बाई 128 नु ओनली 127 होला आ हम समय पीरियडिक टेबल टा घोषिया पे जो माड खाइछु हम माड को बेसी अपमान तो इंसल्ट देइछु आ व्हिच आर्टिकल ग्रांटेड द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स आर्टिकल 130 131 132 133 रानी मुखर्जी गीतटा कौन गीतटा सेटा सौ 131 इज राइट आंसर है ना 131 प्रीति बहुत बढ़िया 131 है ना तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट केतरा जुरिडिक्शन अछि या तो कमेंट लिखितो होला ओ जो माने सिविल सर्विस में प्रिपेयर हो तो प्रीति एंड पूजा खास कर सगा कहउतले जो मु को जिंस कहबी सुप्रीम कोर्ट को डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन जा छला कोन कोन जुरिडिक्शन अछला सेटा को टिके कंसीडर करता ना टी डेप्थ पचार दिए ना सेटा पे टिके जानतो फैक्ट सब जानि था हला राइट आंसर आर्टिकल 32 132 आर्टिकल 132 इज राइट आंसर है ना which article allow the Supreme Court to issue writs for enforcement of fundamental rights? Article 32, Article 136, Article 137, 139. Original jurisdiction. Original appellate out. Original jurisdiction, appellate jurisdiction out. कौन jurisdiction होगी? 32 is right answer. 32. है ना? Article 32 okay. The power of the Supreme Court to review its own judgment is proved under which article? Okay, आउ गोटे मने पड़ू नाही सत्य कौन हो Article 137 is right answer. The Comptroller Auditor General (CAG) is India appointed under which of the article? Okay, कितना article होने जाई Comptroller Auditor General of India को appoint करा जाए आउ गोटे रिट्स ऊपर मन 148 Article 148 over right answer है ना Which article outlined the duties and powers of the Comptroller Auditor General 148, 149, 150, 151? K. Sanjay Murthy, CAG, was. अच्छा अंडमान निकोबार रो एडमिनिस्ट्रेटर किए अछंती जे गवर्नर अंडमान निकोबार आइलैंड्स रो गवर्नर किए अछंती एडमिनिस्ट्रेटर किए अछंती Article 149 is right answer है ना अच्छा सल्ला क्लास नहीं thank you Pooja Priti and Satya for participating in the class and please समस्त share कर दियो है ना thank you for की सर्च करके इंटरनेट रासलो की क्लास चल चला नहीं और तुम साथ सहयोगिता मत आगु बढ़ी चले एमती प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो थैंक यू